पिछले क्लास में हम लोगों ने मैग्नेटिक इंडक्शन B को डिफाइन किया है। अब हम लोग बायर-सावर्ट लॉ से B को कैलकुलेट करेंगे फॉर डिफरेंट शेप्स ऑफ वायर। सो लेट अस डिस्कस बायर-सावर्ट लॉ। According to बायर-सावर्ट लॉ, this is a current carrying conductor and this is a current element. I is the current flowing in the conductor and we are taking a very small length of the conductor and this IDL is called current element. And with respect to this current element, P is the point whose position vector is R. The position vector of point P with respect to current element IDL is R. The angle between current element and position vector R is theta. According to Bayer-Savarт law, delta B, magnetic induction vector, due to current element IDL at point P having position vector R is given by delta B is mu naught by 4 pi IDL cross R by R cube. So delta B due to current element IDL at point P having position vector R is the vector product of IDL and R. IDL and R. And it can be rewritten as mu naught by 4 pi IDL R sin theta by R cube and unit vector n. Here n is a unit vector in the direction of delta B because delta B is vector quantity. N is perpendicular to IDL and perpendicular to R. We will discuss, of course, the direction of N after certain time. Now, it can be written as mu naught by 4 pi IDL sin theta by R square N. Both of the R इस R cube के R को कैंसिल करता है. So now you can write delta B is mu naught by 4 pi IDL sin theta by R square. This is the magnitude of magnetic induction vector. This is the magnitude. तो ये जो इंडक्शन वेक्टर का मैग्नीट्यूड है डेल्टा बी, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आईडीएल. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आईडीएल का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे करंट एलिमेंट का वैल्यू जितना ज्यादा होगा बी का वैल्यू भी उतना ही ज्यादा होगा. करंट एलिमेंट मींस करंट एज वेल एज द लेंथ ऑफ द एलिमेंट, इन दोनों का प्रोडक्ट जितना ज्यादा होगा बी उतना ही ज्यादा होगा. डेल्टा बी is inversely proportional to R square. Inversely का मतलब ये होता है कि जैसे जैसे पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारा दूर होता जाएगा B का वैल्यू कम होता जाएगा. पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर हमारा नजदीक है तो B का वैल्यू ज्यादा होगा. एंड डेल्टा B is directly proportional to sin theta. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा का मतलब ये हुआ कि अगर ये आपका आईडीएल है एंड दिस इज योर पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन P, ये रहा आपका R, तो आपने क्या देखा आईडीएल और R के बीच का एंगल चूंकि थीटा 0 है इसलिए डेल्टा B का वैल्यू 0 होगा. वायर के इलॉन्गेशन पर
b का वैल्यू 0 होगा। अगर ये रहा आपका p पॉइंट, ये दिस इज द पॉइंट p, दिस इज द पोजीशन वेक्टर। अगेन हियर आल्सो आइडियल और r के बीच का एंगल कितना है बाबू? ये आइडियल और r के बीच का एंगल है थीटा इज पाई, सो अगेन डेल्टा b इज 0 और डेल्टा b मैक्सिमम होगा, डेल्टा b मैक्सिमम होगा, इट इज मैक्सिमम when the angle between ideal and R is 90 डिग्री। आइडियल और R के बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि दिस इज योर ideal and this is your point of observation P। तो ideal and R के बीच का एंगल थीटा यहाँ π/2 है, तो डेल्टा B is maximum। तो हम लोगों ने अकॉर्डिंग टू बायट-सावर्ट लॉ B के मैग्नीट्यूड को हमने देखा कि according to current element ideal delta B is mu naught by 4 pi ideal cross R by R cube। Delta B is a vector quantity, first point। Delta B is perpendicular to ideal and R, second point। Delta B is a vector quantity, it is perpendicular to both ideal and R, that means it is perpendicular to the plane containing ideal and R। Third point is delta B is directly proportional to current element। Larger the current element, larger the value of delta B। Delta B is inversely proportional to R, inversely proportional to R। जैसे जैसे हम लोग दूरी बढ़ाएंगे करंट एलिमेंट से, डेल्टा B का वैल्यू छोटा होगा। And delta B is directly proportional to sin theta on the elongation of current element at point P and at point P dash, value of B fill is 0 and value of B fill is maximum at point P if the angle between ideal and R is 90 degree। So हम लोगों ने B को मैग्नीट्यूड वाइज डिफाइन कर दिया, B को मैग्नीट्यूड वाइज हम डिफाइन कर देते हैं। नाउ हाउ वी कैलकुलेट द डायरेक्शन ऑफ बी फील्ड। तो बी फील्ड के डायरेक्शन को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग को थोड़ा सा आइडिया वेक्टर प्रोडक्ट का होना चाहिए। एंड ऑफ कोर्स वी आर एक्वेंटेड विथ वेक्टर प्रोडक्ट फ्रॉम आवर क्लास 11 टॉपिक। तो 11 के टॉपिक पे हमने वेक्टर पढ़ा है, इसलिए हम लोग को बहुत ज्यादा स्ट्रेस वेक्टर पे नहीं देना है। एक हल्का सा आइडिया हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट का देखेंगे कि व्हाट इज क्रॉस प्रोडक्ट। ये उसी तरह से रहेगा। ये रहा वेक्टर A and this is your vector B। The angle between two vectors is theta। Cross product which is also called vector product between A and B, C is equal to A cross B, that is C is mod A mod B sin theta n। We are not concerned with the magnitude of vector C,
we'll simply calculate the vector C. Of course, the angle is concerned. So C is A cross B. C is perpendicular to both A and B. C is perpendicular to both A and B. Now there are two perpendicular on the plane containing A and B. This is outward and of course this is inward. Into, and this is out. Like that. If the vector is coming out and if the vector is going into. To know the exact perpendicular, we place a right-handed cork screw at the junction of A and B and rotate the cork screw from A to B. From A to B. From A to B. And the direction of advancement of right-handed cork screw will give the direction of A cross B. Moreover, we will see when we are moving from A to B in the anti-clockwise sense, yes, it is moving in the upward direction. So the vector is like that. This is the tip of arrow. Arrow is coming towards you. If we are calculating from B to A, we are moving like that in the clockwise sense and B cross A is inward. A cross B is outward. So C is perpendicular to both A and B. Now I is a unit vector towards x-axis. J is unit vector towards y-axis. And of course, K cap is a unit vector towards z-axis. Now, I cross I is mod I, angle between I and I, sine theta is 0, so it is 0. So I cross I is 0, J cross J is 0, K cross K is also 0. K cap cross K cap is 0 because the angle between I and I is 0, J and J is 0 and K is 0. Now I cross J. I cross J is mod I, mod J. I cross J is mod I, mod J, sine 90 degree and unit vector N. This is your vector I and this is vector J. This is vector J. I, J. So I cross J is perpendicular to I, x-axis, perpendicular to J, y-axis. It is K. I cross J is K and J cross I is minus K. It is so simple, so we are not, of course, discussing to a larger extent. Now it can be easily written as follows. This is your I, J and K. And if we move from I to J or J to K or K to I in the clockwise sense,
it will be positive. That means I cross j is k. J cross k, I, and k cross I is j. In the similar fashion, we can write I, j and k, and it is negative if we are moving from I to j to k in the anti-clockwise sense. That is, j cross I anti-clockwise, it is minus k. I cross k anti-clockwise, so it is minus j, and k cross j, of course it is minus I. So we can vectorially calculate the direction of cross product, because here delta E is also cross product of I, dl and R. So this is of course our main tool. I cross j is k, j cross k is I, k cross I is j. In the similar fashion, j cross I is minus k, I cross k is minus j, k cross j is minus I. So now, with the help of vector rule, we can calculate the direction of delta B as follows. Direction of delta B as follows. Delta B is perpendicular to IDL and perpendicular to R, and if this is your IDL and this is R, this is R. So now it can be written as x-axis and this is your y-axis. So IDL is along J and R is along I. So what is J cross I? IDL cross R. IDL cross R. IDL cross R is IDL is J cross I, that is minus Q. So at this point B fill is inward. B fill is inward. This is your ideal, this is your R, and B is inward. This is the inward vector. In the similar fashion, if we are calculating B at this point, this is your ideal J and this is your R. R is minus I. So now J cross minus I is K. J cross minus I is K. J is of course along ideal and of course this is your R. So here ideal cross R is in the outward direction. Here ideal and this is R inward direction, ideal and R outward direction. Here this is your ideal. So ideal is along minus J and R is along I. R is along I. So what is ideal cross R?
ideal cross R is minus J cross I, and it is minus J cross I. So J cross I is minus K and minus, so it is plus, so it is K. So here it is of course in the outward direction, and at this point this is your ideal and this is your R. Ideal and R. Ideal is minus J, R is minus I. So minus J cross minus I, it is minus K. So here it is inward and here it is outward. Again, this is your ideal. This is your ideal and this is your R. Again, ideal cross R is, ideal is I and this is your J, so I cross J is outward. And here it is inward. This is your ideal and R is minus, so it is inward. So vectorially we can calculate the value of delta B as the cross product of ideal and R. Now, a very simple rule, very simple rule can be applied for the calculation of B, and the rule is called right hand thumb rule. The rule is called right hand thumb rule. So we will calculate the value of magnetic induction vector with the help of right hand thumb rule. According to right hand thumb rule, we will catch the current carrying conductor by our right hand. We will catch the current carrying conductor by our right hand, and of course in such a way that the thumb should be pointed in the direction of current. The thumb should be pointed in the direction of current. We will catch the current carrying conductor by our right hand in such a way that the thumb should be pointed in the direction of current, and the curling of finger will give the magnetic lines of force or the lines of force of induction. And at any point, if we draw the tangent will give you the direction of B field. Let us calculate B field for this current carrying conductor. Now we will catch the current carrying conductor by our right hand in such a way that the thumb should be pointed in the direction of current. Now, when we try to catch this conductor, of course we cannot catch it. दिल ही दिल में हम लोग इस ब्लैक बोर्ड को इस दो पॉइंट पर कट कर देंगे. कट कर दिया. अब ऐसे उंगली अंदर जाती है, पियर्स करती है और फिर उधर से बाहर आ जाती है. सो अब हमने करंट कैरिंग कंडक्टर को पकड़ लिया, उंगली अंदर गई और घूम के बाहर आ गई. सो ये ऐसे एक सर्कुलर लाइंस ऑफ फोर्स हो गया, अंदर और घूम के बाहर, ये लाइक दैट. सो दिस इज इनवर्ड एंड दिस इज. अगर ये हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर है,
हम लोग कोशिश करेंगे इस करंट कैरिंग कंडक्टर को राइट हैंड से पकड़ने के लिए, सो दैट द थंब शुड बी पॉइंटेड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। कोशिश किया, नहीं पकड़ लिया, हमने यहाँ कट कर दिया, देखा उंगली अंदर गई और घूम के बाहर, आउट। सो दिस इज योर आउट, दिस इज योर इन। ऐसे अगर पकड़ने की कोशिश करते हैं ये, तो ये थंब शुड बी पॉइंटेड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, उंगली ऐसे अंदर गई और घूम के बाहर किसी, इन एंड देन आउट। यहाँ पे हम लोग ब्लैक बोर्ड को कट करेंगे, दिल ही दिल में कट करेंगे, ऐसे उंगली अंदर जाएगी हमारी और घूम के बाहर आ जाएगी। सो इट इज आउट एंड दिस इज इन। अगर हमारा करंट ऐसे है, now again we are trying to catch this current carrying conductor. We will cut the blackboard at these 2 points. यहाँ पे काट दिया हमने, उंगली अंदर गई और फिर बाहर आ गई। So here it is outward and here it is inward. So हमने करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से बी फील्ड निकाला। According to right hand thumb rule, we will catch the current carrying conductor by our right hand in such a way that the thumb should be pointed in the direction of current. Curling of finger will give magnetic lines and tangent at any point will give the direction of B field. So here it is inward, outward. Here it is inward and outward. Here it is inward and outward. Here it is inward and here it is outward. और हमने यहाँ अगर निकालने की कोशिश की तो this is your current carrying conductor, this is your inward and that is your outward. So here the B field is inward and here the B field is outward. So हम लोग B field को बहुत आसानी से डायरेक्शन में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इफ दिस इज योर करंट कैरिंग कंडक्टर, वी विल कैच द करंट कैरिंग कंडक्टर बाय योर राइट हैंड एंड दिस इज योर मैग्नेटिक लाइंस। यस, दिस इज योर मैग्नेटिक लाइंस। इट इज लाइक अ सर्कल एंड हियर द बी फील्ड इज लाइक दैट, हियर इट इज लाइक दैट, हियर इट इज लाइक दैट एंड हियर इट इज लाइक दैट। So in different situation we will calculate the value of B field due to current element and current carrying conductor. So अगले क्लास में हम लोग फिर डिस्कस करेंगे, कैलकुलेट करेंगे डिफरेंट शेप्स ऑफ द वायर के लिए, लाइक सर्कुलर कॉइल एंड इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, और ऑफ कोर्स अ सर्कुलर कॉइल की वजह से किसी एक्सियल पॉइंट पे बी फील्ड। सो डिफरेंट शेप्स ऑफ वायर के लिए हम लोग बी फील्ड निकालेंगे एंड वी विल ऑफ कोर्स सॉल्व सम ऑफ द प्रॉब्लम्स व्हिच हैज बीन आस्क्ड इन नीट और जेईई मेंस। ओके, थैंक यू।